बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम फेसबुक मार्केटिंग पढ़ रहे हैं। हमने देखा कि फेसबुक में पेज को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं और फेसबुक पेज क्रिएट कैसे होता है, उसमें डिफरेंट टेक्निक्स और टिप्स क्या यूज़ होती हैं। इससे पहले हम वो सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज जो चीज़ हम पढ़ने लगे हैं, that is very knowledgeable, that is very tricky, that is very technical, and that needs your complete attention span, and that also has a very value and has a lot of value in the industry for your clients and for your brand and businesses as well. So today we are going to get to know about the best guide to creating Facebook ad. So we will be learning how to create Facebook ads, कहाँ से क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, और किन प्लेटफॉर्म्स पे हमने रन करना है, कैसे रन करना है, क्रिएटिव्स कैसे चलते हैं, एड्स मैनेजर क्या होता है। ये सारी आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। Guys, this is real happiness for me. You guys are learning, you guys are growing, and the real thing that inspires me is your passion. So let's move toward the Facebook Ads Manager. Facebook Ads Manager में हम जब भी एड रन करेंगे तो सबसे पहले वी हैव टू लॉग इनटू business.facebook.com/ad-manager। उसका कुछ इंटरफेस इस तरह का होगा जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और मैंने अक्सर देखा है कि many students are worried about their friends seeing their ads or business Facebook pages. So first off, Facebook ads and your Facebook page are separate from your personal फेसबुक प्रोफाइल। इनको हम तीन चीजें कंसिडर करेंगे। फेसबुक प्रोफाइल एक अलग चीज है, फेसबुक एड एक अलग कहानी है, और फेसबुक पेज एक अलग ही स्टोरी है। योर पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल इज जस्ट नीडेड टू क्रिएट अ फेसबुक पेज एंड अ फेसबुक बिजनेस मैनेजर, राइट? सो दैट सेड, you don't need to create your business page. So you do need to create a business page first before creating your Facebook ad. So अब जब हम फेसबुक एड मैनेजर में हम लॉगिन करते हैं तो स्टूडेंट्स वी हैव टू हैव थ्री लेवल्स। एड क्रिएशन के हमारे पास 3 लेवल्स आते हैं। उन 3 लेवल्स में हमारे पास सबसे पहला जो लेवल है दैट इज कैंपेन लेवल, द सेकंड वन इज एड सेट लेवल, और थर्ड इज एड लेवल। पूरे आगे आने वाले पूरे के पूरे लेक्चर में हम लोग आप लोग ये देख रहे होंगे कि ये बार बार ये चीजें रिपीट होंगी, और यहाँ से ही सारी चीजें स्टार्ट होंगी, ट्वीक होंगी, और यहाँ से ही हम अपने बहुत सारी चीजों को देख रहे होंगे। उसके बाद कैंपेन लेवल पे यू सेट योर ऑब्जेक्टिव्स, एंड एड सेट लेवल पे यू सेट योर ऑडियंस, टारगेटिंग, बजट, स्केड्यूल एंड प्लेसमेंट, एंड एट एड लेवल यू क्रिएट योर एड क्रिएटिव एंड कॉपी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। योर फेसबुक कैंपेन ऑब्जेक्टिव इज वेयर यू सिलेक्ट what you want people to do when they encounter your Facebook ad. So when you create Facebook ads, your first step is choosing your objective. So think of Facebook ads as a giant set of funnel. At the top of the funnel, you are building awareness about your brand and finding new potential customers. So as you work people down your funnel, you want to direct them to take actions, make a purchase, or sign up for XYZ, and sign up for any kind of brand or business. So using the correct campaign objective will help you convert customer at each step of the funnel. So if you want to direct people to your website, you will create a Facebook ad campaign with a traffic objective. तो यहाँ पे सिर्फ कैंपेन ऑब्जेक्टिव का एक चीज समझाने के लिए मैंने ये एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी। So nothing to worry about. Over the progress of the lecture and with the development of this lecture, you will learn each and everything in detail. So let's move toward the second step. So your Facebook ad set is the step at which you select your targeting options: audience, location, age, language, gender, and interest, placements, budgets, schedule, and more for your Facebook campaigns. So editing your ad set will change the potential reach of your ads campaign. Smaller audience will cost more to reach, but typically increases your ad relevancy since your ads can be laser focused, and with a broad audience, 1 million plus reach will be a lower cost to target and are better for top of funnel first touch point ad for you. So अब ये देख है कि जैसे आप एड्स मैनेजर में जाते हैं तो कैंपेन लेवल, एंड देन आपका आ जाता है न्यू एड सेट, एंड देन न्यू एड। तो थर्ड पॉइंट जो हमारे पास आता है, जो थर्ड स्टेप है, दैट इज एड। सो योर फेसबुक एड इज द स्टेप एट विच यू क्रिएट योर एक्चुअल एड, and you select media, you select format,
You select links, calls to action, and more for your Facebook campaigns. So ad formats, depending on your campaign objective, you can select varying formats for your ad. You can select images, videos, slideshows, carousels, collection, and instant experiences. And what are the images, video shows, carousel, collection, instant experiences? क्या हैं ये? आप फेसबुक के हेल्प सेंटर पे जाके या फेसबुक इमेज गाइड पे जाके वीडियो और कैरोसेल इनके गाइड्स, स्पेसिफिक गाइड्स पे जाके आप इनके बारे में मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना बताता चलूँ कि ये हमारे पास कुछ एड फॉर्मेट्स होते हैं, नथिंग टू वरी अबाउट। हम आगे जाके हर एक चीज़ को एक्सप्लेनेशन के साथ इस सारे लेक्चर में देखने वाले हैं। सो अब अगला क्वेश्चन आता है कि जब हमारे पास ये 3 लेवल्स आ गए हैं तो नेक्स्ट फौरन से एक क्वेश्चन बनता है कि आओ यार एक एड्स क्रिएट करें। सो हाउ टू क्रिएट एड, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आप एड्स मैनेजर में गए, आपने एड्स मैनेजर को देखा तो लेफ्ट साइड पे आपका प्लस एंड क्रिएट का ग्रीन कलर का बटन है। जैसे ही आपने वो बटन क्रिएट क्लिक किया तो आपके पास एक पॉपअप विंडो जनरेट होगी। उस पॉपअप विंडो में आपका आता है क्रिएट न्यू कैंपेन और यूज एग्जिस्टिंग कैंपेन। सो यू हैव टू क्लिक द क्रिएट न्यू कैंपेन, और जब आपने वो चूज की, क्रिएट न्यू कैंपेन चूज की, तो आपके अंदर आपके उस पॉपअप के अंदर 3 सब हेडिंग्स आ गई, जिसको आप अवेयरनेस या ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन्स। सो इसमें आपके पास ये 3 हेडिंग्स आ गई। उस अवेयरनेस में आपके पास ब्रॉड ब्रांड मैनेज अवेयरनेस आ गई, रीच आ गई, ट्रैफिक आ गई, एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल, वीडियो व्यूज, लीड जनरेशन एंड मैसेजेस। कंसिडरेशन में आ गए, एंड कन्वर्जन में conversions, catalog sales, or store traffic. Nothing to worry about. Again, we will let each and everything in a detail. So हम इनमें सारे जो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, 11 ऑब्जेक्टिव्स, ये सारे के सारे हम 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव तो आ गया, नेक्स्ट हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार इन ऑब्जेक्टिव में से हाउ टू चूज द राइट ऑब्जेक्टिव फॉर माय बिजनेस, for my client business. So remember when I compared selecting your Facebook ad objective to a funnel, uh, depending on where your customer is in the buying cycle and what your ad ultimate goal is, will help you decide which Facebook campaign objective to select. So are you building awareness? Are you looking for customers seeking further information about your product or service? Are you converting interesting people to buy your product or service? So let's look at some example scenarios. So for example, our goal is to increase awareness of my brand. Example ad objectives to test. The first one is reach objective, brand awareness objective, engagement objective. So in reach objective, show your ad to people who are near your local business. In brand awareness objective, show your ad to the broad audience of relevant people to introduce them to your brand. Sorry. So in engagement objective, boost your Facebook post to reach as many relevant people as possible and increase engagement. Now, ये अगेन एग्जाम्पल मैं कोट कर रहा हूँ। अगर हमारा गोल है कि फाइंड कस्टमर्स, so example ad objective to test is traffic objective, lead generation objective, engagement objective, and message objective. So in traffic objective, we basically try to increase the website traffic. We invest for increment in the website traffic while growing custom audience for future retargeting ads as well. So collect information from people, email, phones, so you can sell to them via email, phone, or retargeting customer audience in the future ad campaign. In engagement objective, we promote our events and increase attendees. And in message objective, we start conversation with our potential customers. और अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम सेल्स को इनहांस करें, सेल्स को इंक्रीज करें, तो उसके लिए example ad objective that can be tested are engagement objective, app install objective, conversion objective, and message objective. So engagement objective हम पहले से देख चुके कि we have to create post with an offer, coupon, and discount, etc. Increase engagement of this Facebook page post. So in app install objectives, increase installs of your Facebook app. So in conversion objective, increase website conversions, and in message objective, connect with customers, answer questions, and derive them from interest to purchase. So these were the examples कि हम किस तरह से ads के different objectives को select कर सकते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया. So अब campaign objective में all the times you have to face and you have to encounter with the first 3 steps. So let's learn about them individually. So select the campaign objective. First of all, आपके पास ये pop-up open हो गया. आपने सबसे पहले once you select your campaign objective, click to continue button. आपने ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, और जैसे ये प्रेजेंटेशन डेवलप हो रही है तो आपको साथ साथ आपका इसकी एक्सप्लेनेशन भी मिलती रहेगी.
अगेन नेम द कैंपेन, आपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया, अब उस कैंपेन को नाम करें। नोटिस ईच लेवल इन द लेफ्ट साइड बार यू कैन टॉगल बिटवीन टू एडिट ब्लू हाईलाइट व्हाट यू आर करंटली एडिटिंग। अगर वो कैंपेन पे है ब्लू तो वो कैंपेन एड सेट एंड एड है, जिस पे भी ब्लू होगा वो आप उस वक्त एडिट कर रहे होंगे। आपने अपनी कैंपेन को नेम देना है यहाँ पे आके। अगेन नेम योर कैंपेन फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन इन फ्यूचर रिपोर्ट एनालिसिस, ये आपने माइंड में रखना है कि फ्यूचर एनालिसिस के लिए, अगर फ्यूचर रिपोर्ट के लिए, फ्यूचर एनालिसिस के लिए, ट्रैकिंग के लिए आपने ऐसा नाम देना है जो आइडेंटिफिएबल हो, जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। फॉर एग्जांपल आई हैव क्रिएटेड अ बीइंग ब्रो ट्रैफिक कैंपेन ऑब्जेक्टिव टारगेटिंग men from 18 to 30 living in the United States of America। सो मैंने क्या किया, ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव है men 18 to 30 and US is the location of the। सो ऐसा कैंपेन का नाम रखें जो आइडेंटिफिएबल भी हो, जो इजी टू रिमेंबर भी हो, ताकि इसको आप फ्यूचर में जाके जब आप रिपोर्ट एनालिसिस कर रहे हो या ट्रैकिंग कर रहे हो तो आप उस ट्रैकिंग में इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकें। उसके बाद जब आपने कैंपेन नेम सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद आपके पास आता है बाइंग टाइप। So confirm the buying type is set to auction. Alright, so आपने auction पे उसको set करना है। Next, confirm the campaign objective you selected। आपने पहले क्या campaign objective scroll down करके इसको select करना है and then set the campaign budget, daily budget आपने। अच्छा, यहाँ पे जब हम अपना बजट सेट कर रहे हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उन क्वेश्चंस में कि कैंपेन की बजट को ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, कितना बजट लगाना है, किस तरह से स्केल अप करना है और कितने पैसे खर्चने हैं, कैसे खर्चने हैं, ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में इस डेवलपमेंट में हम आगे पढ़ेंगे। सो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट योर बजट अक्रॉस एड्स टू गेट यू मोर रिजल्ट्स। For help, you can visit this link. So with campaign budget optimization, you set the overall daily or lifetime budget for the campaign you create. So if you create multiple ads or ad set within a campaign, campaign budget optimization will optimally distribute your budget to all those ad sets. So this means Facebook automatically optimizes for the best results and distributes your campaign budget in real time to achieve those results. Now, until I have an ad campaign optimized and I'm confident about scaling up the daily budget because my ad is converting well and it's performing well as well, I will start with a small daily budget in order to split test many variables at once via multiple campaign ad sets and ads for just $5 per day per campaign। So आपने जब भी टेस्टिंग करनी है, I have a request for you कि आप $5-10 से ऊपर ना लगाएं टेस्टिंग के फेज में। उसके बाद कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी, आई सी द बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम लोएस्ट कॉस्ट फॉर कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी। आते हैं जी आगे। अच्छा, ये तो हमने सीख लिया कि बजट ऑप्टिमाइज कैसे करना है, क्या देखनी है, क्या क्या चीजें उसमें देखने वाली हैं। अब जो अगला पॉइंट सीखने वाला है वो है कि व्हाट शुड बी ओवर बजट बी, व्हाट शुड ओवर बजट बी, कि हमारा बजट क्या होना चाहिए, कितने पैसे हमें खर्चने चाहिए, कहाँ खर्चने चाहिए, क्या मैट्रिक्स देख के हमें पैसे खर्चने चाहिए। सो आई ऑलवेज बिलीव स्प्लिट टेस्टिंग many ad campaign, one variable per campaign at $5 to $10 daily budget per campaign. That's enough. As you begin to see winning campaigns emerge, you see a high return on marketing investment, shut off the losing ads, and continue to split test the winning variables until you have an optimized and highly converting ads। यहाँ पे इसको स्टेटमेंट के तौर पे समझने की कोशिश करें। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम स्प्लिट टेस्ट करते हैं, ए बी टेस्ट करते हैं, और उस टेस्ट के नतीजे में हम किस तरह से हाईली कन्वर्टिंग एड्स और हाईली रोमी एड वाले रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट वाले एड्स पे हम पैसे लगाना शुरू कर देते हैं, बाकी जो जितने भी लूजिंग एड्स होते हैं उनको खत्म कर देते, बंद कर देते हैं। सो विनिंग मैट्रिक्स में हम देखेंगे एड रेलिवेंस। किसी भी एड की अगर उसकी एड रेलिवेंस इज मोर देन 60%, सो or it's above average, then it's good, it's a winning metric for us। CPC is less than $1 and CTR is greater than 2% and cost per lead CPL less than $10 for most industries। This can be much higher depending on products or services price। So lead capture page conversion greater than 10%। so ये हमारे winning metrics हैं जिसके बेस पे हम ये decide कर सकते हैं कि यार ये ad जो है this is performing well for us, this is performing great and this is the winning ad
and this is the winning campaign, so we should go for this and we should invest in this and we should allocate over marketing budget, some kind of budget from our overall ad spend. So these are the winning metrics on the basis of which we decide where should our budget go. So how to scale up your budget? Another again a question के पहले बजट की ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, तो कितना बजट लगाते हैं या किन विनिंग मैट्रिक्स की बेस पे बजट लगाते हैं। अब उसके बाद बजट का अगला एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि अब मेरे पास आइडेंटिफाई हो गया विनिंग मैट्रिक्स की बेस पे कि मेरे पास जो ऐड आया विनिंग ऐड कौन सा है। सो उस विनिंग ऐड पे अब अगला क्वेश्चन जो बनता है कि हाउ टू स्केल योर बजट। Once I have the winning variable identified and a highly converting and running ad running, then and only then will I slowly scale up the daily budget by 25% every 3 to 4 days or 50% once a week. Never jump from a $10 daily budget to $50 in a day. Never do that. Facebook will just burn through your ad spend budget. You want to slowly turn up the ad spend on winning campaign. So example, अगर आपने $10 एक हफ्ते में लगाया तो अगले हफ्ते में आपने $15 लगाना है, उससे अगले हफ्ते में $22 लगाने हैं एंड सो ऑन। आपने एक बहुत बड़ा जंप नहीं लेना, आपने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट का जंप नहीं लेना, 10 से 50 पे नहीं जाना। ऑल्दो फॉर द ब्रांड्स एंड कंपनी दिस इज नॉट अ बिग इन्वेस्टमेंट, बट अगेन फेसबुक की जो लर्निंग पर्पज के लिए आपने हमेशा 25% विद इन 3 to 4 days और 50% इन अ वीक अपने बजट को स्केल अप करना है। उसके बाद अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी पॉइंट पे फेसबुक में, आपको फेसबुक एड मैनेजर में आपको प्रॉब्लम आती है, लेफ्ट साइड बार में नीचे क्वेश्चन मार्क है, वहां पे आप क्लिक करेंगे। यू हैव टू एक्सेस द हेल्प सेंटर एट एनी टाइम इन योर बिजनेस मैनेजर बाय क्लिकिंग द क्वेश्चन मार्क और इंटरोगेशन मार्क बटन इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, और यहाँ से आप कोई भी हेल्प सेंटर से आप हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट, नाउ वी कैन मूव एडिटिंग टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज द एड सेट लेवल। So, हमने देख लिया कैंपेन सेट कैसे करते हैं, कैंपेन के सारे एट द एंड बजट ऑप्टिमाइजेशन तक भी हमने चीज देखी। अब हम आते हैं सेकंड मैट्रिक्स पे। सेकंड जो आपका लेवल है दैट इज एड, इट्स अ न्यू एड सेट लेवल। सो नाउ वी कैन मूव ऑन एडिटिंग दिस लेवल। सो लेट्स हाउ टू क्रिएट ईच टाइप ऑफ फेसबुक कैंपेन स्टेप बाय स्टेप। अब हम ये चीजें सीखेंगे जो हमारे पास पॉपअप जनरेट होता था और उसमें हमारे पास 11 डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स थे कैंपेन्स के। अब हम सीखेंगे वन बाय वन उनको किस तरह से क्रिएट करते हैं, कैसे उनमें से आरओआई निकलता है, किस तरह से वो उन पे क्रिएटिव्स यूज होता है। सो वी विल बी लर्निंग ऑल ऑफ दीस पॉइंट्स इन द कमिंग लेक्चर्स। सो इन कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमने देखा कि सबसे पहले जो हमारे पास आया दैट इज ब्रांड अवेयरनेस। सो ब्रांड अवेयरनेस पे हमने क्लिक किया। हम देखते हैं कि अब हम सीखने की बात है कि ब्रांड अवेयरनेस तो हमारे पास फेसबुक एड्स मैनेजर, बिजनेस मैनेजर ने हमें दे दिया कि ये ब्रांड मैनेजर जो आपका ब्रांड अवेयरनेस का एक मैट्रिक है उसको या उसका एक ऑब्जेक्टिव उसको कैसे अचीव करना है। और अब हम पे है कि उसको यूज कब करना है, जब हमारा मकसद होगा टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट अवर ब्रांड। व्हाट प्लेटफॉर्म्स? फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर एंड विच एड फॉर्मेट इसके लिए हम यूज करेंगे ब्रांड अवेयरनेस के लिए? सिंगल इमेज और उसके बाद सिंगल वीडियो, कैरोसेल्स एंड स्लाइड शोज। So best practices for the brand awareness are: the only goal of this ad type is to increase brand recall lift. It means number of people likely to remember your ad within 2 days and emotionally resonate with your target customer. हमेशा यहाँ पे एक माइंड में रखनी एक चीज कि don't try to sell. This is awareness ad. बहुत सारे लोगों को मैंने कंफ्यूजन में देखा कि वो अवेयरनेस एड रन करके उसमें से सेल्स चाह रहे होते हैं, उसमें से लीड्स चाह रहे होते हैं। That's absolutely a great flaw. That's absolutely a great fallacy जो एक that leads to the inappropriate spend of the budget. So think of this objective as a touch point. A customer needs on average 7 touch points, visually seeing your brand before remembering and purchasing from your business. Use this ad objective as your introduction or ongoing remember me ad. So when I teach clients or students about the brand awareness, I use the comparison on Coca-Cola. You don't see Coca-Cola on sale. आपने कभी नहीं देखा होगा कि आप किसी भी फेसबुक सोशल प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, माइनस फेसबुक की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे कोका-कोला सेल नहीं करता। कोका-कोला ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड रिकॉल लिफ्ट बढ़ाता है।
कोका कोला बेसिकली रिमेंबर मी की कैंपेन्स चलाता है. So you see brand awareness ads for Coca-Cola everywhere. So the next time you're thirsty, the 7 touch points or 700 for Coca-Cola will subliminally remind you to buy a Coke. So this video is a prime example of your brand awareness. अगर मैं इसको आप इसको प्ले करें, आप इसके लिंक पे जाएं. Subtle use of the Under Armour products in the video makes the audience associate talent and skill to the brand. This objective is best for promoting your emotions-provoking videos, stories connected to your brand. If your brand doesn't have a story or a logo that will resonate yet, the next best thing is to promote your blog post, your surveys, your trial, your newsletter, your ebook, your webinar for free, so people can learn more about your ad and your brand. Make sure you have clicked the ad set level to edit your targeting. Name your ad set to describe your exact targeting option. This will make reviewing your ad performance and identifying the winning variables in your Facebook ads reporting much easier in the future. Audience page. It is on the ad set level that we select our target audience for the campaign. Keep your targeting audience broad with brand awareness ads. Remember, this is our first touch point with this potential customer. We are in the discovery phase of identifying our perfect target audience. So, brand awareness ad set में आपने to stay broad करना क्या? I will just use my Facebook page. मैं जाऊँगा inside page पे, वहाँ पे people की tab को click करूँगा to see our page demographic. So, for this brand awareness ad, I will target men only, age 18 to 34 worldwide. And so based on my Facebook page insight, I set the ad targeting for this type of funnel brand awareness ad. For example, worldwide, age 18 to 34, man, language is English. If you want to exclude people who already like your Facebook page, you can via the connection option on the ad set level. And connections, another great connection targeting. I like to test as friends of people who like your page ad. Prefer for engagement, page like, campaign objective. So placement का मतलब ये कि आपका ad नजर कहाँ आएगा. Depending on your campaign objective, you can select what device and what platform your ad will appear on via manual placement. So you will edit this on the ad level set. फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ऑडियंस नेटवर्क है या मैसेंजर है, ये सारी फेसबुक की प्रॉपर्टीज है. ऑडियंस नेटवर्क क्या है? ऑडियंस नेटवर्क जिन लोगों ने, जिन एप्लीकेशन होल्डर्स ने या जिन बिजनेसेस ने फेसबुक के साथ खुद को रजिस्टर किया हुआ है एज ए पार्टनर, नॉट किसी पेज के थ्रू या किसी और, एज ए पार्टनर, तो फेसबुक करता क्या है कि अपने सारे एड्स उनकी एप्लीकेशंस पे, उनके प्लेटफॉर्म्स पे भी दिखाता है. सो वो एक उनका ऑडियंस नेटवर्क डेवलप होता है. अनलेस यू ओनली वांट टू टारगेट अ सर्टेन डिवाइस और प्लेटफॉर्म, Instagram or mobile, leave the placement selection as automatic placement. As we see, the best result from Facebook auto optimization each campaign for the best placement. So placement, Facebook calls it different places they can show your ad or placement. Removing placement will reduce the number of people your ad reaches. Automatic placement is recommended because this gives Facebook more flexibility to get you not only more results but better results as it self optimizes your placements. Now mobile test your website. Again, एक ये बात जो है, mobile test for your website. Make sure your website is responsive and mobile friendly for Facebook. आपने ओपन योर वेबसाइट और फेसबुक एड. अच्छा, ये मैंने आपको एसईओ वाले जो टाइटल है उसमें भी मैंने आपको ये चीजें सिखा दी हैं कि मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट कैसे लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग वालों को भी सिखा दी हैं, और एक जो सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले हैं उनको भी मैंने कहीं ना कहीं आइडिया दे दिया होगा. सो ओपन योर वेबसाइट और फेसबुक एड लैंडिंग पेज यूआरएल इन द गूगल क्रोम ब्राउजर. सो राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द पेज, सिलेक्ट इंस्पेक्ट इन द मेन्यू. ये आप पहले भी बहुत बार कर चुके होंगे. क्लिक द डेस्कटॉप मोबाइल वेयर टॉगल बटन and scroll and review your website to ensure it looks good on mobiles. So leave the optimization and delivery section as the default. Placement हमने देख ली, उसके बाद हम आते हैं optimization delivery. उसको as it is हमने छोड़ना है.
अब हम कैंपेन पे थे, फिर एड सेट लेवल पे आए, अब हमने एड लेवल को एडिट करना है। ऑन द एड लेवल, नेम योर एड टू डिस्क्राइब योर एग्जैक्ट एड आइडेंटिटी, मीडिया, कॉल टू एक्शन, टेक्स्ट एंड लिंक्स. So again, this will make reviewing your ad performance and identifying the winning variables in your Facebook ad reporting much easier in the future. And now select the identity. Select the Facebook page and Instagram account to appear as this ads identify. I get the best return from video ads. अब आपने एड सेटअप के लिए फॉर्मेट देखना है, सिंगल इमेज और वीडियो इमेज या कैरेजल, और आपने फिर उसमें किस तरह से आपने इमेजेस या वीडियोस ऐड करने हैं, ये सेकंड जो नीचे एरो है उससे भी आप यूज कर सकते हैं. सो आई गॉट द बेस्ट रिटर्न फ्रॉम वीडियो एड्स. रिमेंबर द अंडर आर्मर एग्जांपल. इफ यू डोंट हैव अ वीडियो, स्टार्ट विद एन इमेज एड. Select single image or video under the format section of the ad. Make sure to follow the media best practices for sizing and file type when uploading your videos or image. So आप मेरी इमेज बिंग ब्रो की वेबसाइट पे इस लिंक के थ्रू भी आप जा सकते हैं. अगर यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा तो आप फिर आप फेसबुक डायरेक्टली वहाँ से भी सीख सकते हैं कि किस तरह से साइजिंग करनी चाहिए वीडियो की और क्रिएटिव के क्या साइजेस होने चाहिए. ये भी आप वहाँ से इजीली आपको ये आइडिया मिल जाएगा और ये सारी लर्निंग आपको वहाँ से मिल जाएगी. नाउ अब आपकी आ जाती है इंस्टाग्राम फीड्स की बारी. Then you can toggle between placement to see how your ad looks in every view. Facebook news feed, stories, Instagram, ये सारे आप देख रहे हैं कि किस तरह से डिफरेंट फीड्स में, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, स्टोरीज में, इनस्ट्रीम में किस तरह से आपकी डिफरेंट वीडियो एड आपके एड्स शो होगा. So the goal with brand awareness is to cast a large net and begin building your custom audience with people who resonate with your ad. A warm audience. आगे हम चाह के 3-4 चीजें डिस्कस करेंगे. कोल्ड ऑडियंस, वार्म ऑडियंस एंड हॉट ऑडियंस. सो यहाँ पे वार्म ऑडियंस लिया. फॉर एग्जांपल, एन ऑडियंस ऑफ यूजर हु क्लिक योर वेबसाइट यूआरएल कॉल टू एक्शन बटन. सो मेक श्योर टू ऐड अ वेबसाइट यूआरएल एंड टू टर्न योर फेसबुक पिक्सल on so you can build your custom audience for future retargeting ads. Pro tip is a great variable to split test on any type of campaign is CTA. ये आपने माइंड में रख देना है कि उसमें CTA को सबसे पहले चेक करो. उसके बाद अब हम आगे पढ़ेंगे रीच के बारे में कि उसका जो नेक्स्ट अवेयरनेस का हमने पढ़ लिया, रीच के बारे में हम देखेंगे कि ये रीच क्या होती है, कहाँ यूज होती है, किस तरह से इसको फेसबुक एड्स में लेके चलते हैं. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.